बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी हमने देखी है। आज इन्वेंट्री से रिलेटेड एक टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूं और वो है इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। अच्छा, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का अकाउंट अक्सर आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के साथ इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का अकाउंट अपेयर हो रहा होता है। ये क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे ये क्या होता है और कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे इन्वेंट्री इन ट्रांजिट की जरूरत पड़ती है। ओके, सो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट आप देखें कि जैसे नाम से जाहिर है कि वो इन्वेंट्री जो अभी ट्रांजिट में है या इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन ट्रांजिट। सो ये होगा कि इन्वेंट्री परचेज की होगी लेकिन अभी वो परचेज की हुई इन्वेंट्री फिजिकली रिसीव नहीं हुई और अभी ट्रांसपोर्टेशन में है, तो उसको इन्वेंट्री इन ट्रांजिट कहते हैं। अच्छा, अब इसकी अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन देखें आप तो इस तरीके से होगा कि जो इन्वेंट्री है उसकी ओनरशिप या उसका टाइटल जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इन्वेंट्री अभी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में है और अभी फिजिकली वो बायर के लोकेशन के ऊपर रिसीव नहीं हुई है। तो ऐसी जो इन्वेंट्री होती है उसको हम कहते हैं, उसको इन्वेंट्री इन ट्रांजिट कहते हैं। उसको रिकॉर्ड भी इन्वेंट्री इन ट्रांजिट के अकाउंट में किया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रैक्टिकली ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा जिसमें इन्वेंट्री इन ट्रांजिट जो है उसकी जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको रिकॉल कराता हूं इनको टर्म्स हमने पढ़ी थी, इनका इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इनको टर्म्स के नाम से हमने पढ़ा था और आपको याद होगा कि उसमें हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास उसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मुख्तलिफ इनको टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें हमने पढ़ा था एक्स वर्क्स। एक्स वर्क्स अगर मैं आपको याद कराऊं, एक्स वर्क्स में क्या था। अच्छा, सबसे पहले तो इनको टर्म्स एक्स वर्क्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, इनको टर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको टर्म्स मैंने उस वक्त भी बताया था कि इनको टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ये डिफाइन करती हैं इनको टर्म्स कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड्स की ओनरशिप और टाइटल सेलर से बायर को ट्रांसफर हो रहा है, एक चीज। दूसरा ये कि सेलर और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डिफाइन कर देती हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है। और बाकी ट्रांजैक्शंस की भी, जो भी उस ट्रांजैक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सेलर की और बायर की, वो डिफाइन हो जाती हैं इनको टर्म्स के थ्रू। अच्छा, अब एक्स वर्क्स की तरफ आते हैं। एक्स वर्क्स में आपको याद होगा कि जब एक्स वर्क्स किसी ट्रांजैक्शन की बाय सेल ट्रांजैक्शन की जो टर्म डिलीवरी टर्म्स हैं, जो इनको टर्म्स हैं, वो एक्स वर्क्स अगर हो तो उसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सेलर विल मेड द गुड्स अवेलेबल एट हिज लोकेशन विच विल बी रेडी टू बी पिक्ड अप बाय द बायर और बायर्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो सेलर जो है, once he will made the goods available, his responsibility will be over. It means that he has completed his obligation within this transaction. अच्छा, अब अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, एक्स वर्क्स है और आपने सेलर की जो लोकेशन है या उसकी फैक्ट्री है या वेयर हाउस जहां से गुड्स पिक कर ली, तो गुड्स की जो ओनरशिप है वो उसी पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाती है बायर को, लेकिन बायर ने अभी तक गुड्स को फिजिकली रिसीव नहीं किया हुआ। अब अगर ऐसा हो कि जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, इसका मतलब है कि बायर की जो लायबिलिटी है वो तो शुरू हो गई क्योंकि गुड्स उसके पास चली गई हैं, अभी फिजिकली नहीं पहुंची लेकिन गुड्स उसकी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई। तो इसलिए बायर एक लायबिलिटी भी क्रिएट करेगा, बायर इज लायबल टू पे फॉर दैट गुड्स टू द सेलर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा इन्वेंट्री इन ट्रांजिट को वो डेबिट कर लेगा, ठीक है, बिकॉज इन्वेंट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और फिर अपने पास वो एक लायबिलिटी टुवर्ड्स द सेलर वो क्रिएट कर लेगा विच इज अकाउंट्स पेएबल,
और वो इनवॉइस प्राइस जो भी उसकी प्राइस होगी गुड्स की, वो जो है बायर सेलर को पे करेगा बायर, ठीक है। अभी फिजिकली गुड्स उसको रिसीव नहीं हुई है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब जो गुड्स हैं वो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज either buyer or buyer's representative, which may be a transporter, he has taken the custody of the goods, okay, from the seller. So in this case we have inventory in transit. We record inventory in transit, okay. So these are the situations जहाँ पे इन्वेंट्री इन ट्रांजिट जो है वो हमें नजर आता है और वो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट क्रिएट हो। अच्छा, once goods are received, okay, then this inventory in transit will be converted into inventory, ठीक है। जब हमें गुड्स रिसीव हो जाएंगी बायर की लोकेशन पे, तो ये इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इन्वेंट्रीज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जब तक कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो और इन ट्रांजिट हो, तो ये अकाउंट यूज होता है और फिर उसके बाद ये अकाउंट इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बाय द वे, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट अगर है भी, ऐसा हो जाए कि रिपोर्टिंग डेट आ जाए और उस पर इन्वेंट्री अभी भी इन ट्रांजिट हो, तो बैलेंस शीट के अंदर ये इन्वेंट्री इन ट्रांजिट भी इन्वेंट्रीज के हेड में ही रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसकी नेचर जो है वो इन्वेंट्रीज की ही है, ठीक है। फिजिकली इन्वेंट्री भी आपके पास नहीं आई, लेकिन इन्वेंट्री आ जाएगी बिकॉज इट इज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। सो दिस वाज द ब्रीफ डिस्कशन on the inventory in transit. Now I wanted to look upon a practical scenario that will give us more clarity on the inventory in transactions and how practically the things will work if we have a situation and we are purchasing inventory. So how the inventory in transit will be recorded, and then how at what time it will be converted into inventories, and what are the scheme of entries or journal entries in these type of scenarios. So let's go through the example now. Let's go through the practical example. I've tried to create a practical scenario related to inventory purchases, okay. So let's go through it. On June 10, 2022, ABC company purchased 1000 units of inventory at a price of rupees 500 per unit. Sales tax at the rate 17% is applied on the invoice price, okay. The Incoterms agreed with the supplier is X works. ABC company is not registered for sales tax purposes, okay. As supplier is located in a different city, goods need to be transported through a carrier company, which will require 4 days to bring the goods to ABC company's warehouse, okay. The transport company picked the goods from supplier's factory on June 10, okay. So it means that on the same day the transporter picked the goods from supplier's location. Transportation company will charge rupees 25 per unit for transportation. Loading charges paid by the transporter while picking the goods were rupees 10 per unit, okay. So there is some transportation cost plus there are some loading charges so that the goods will be loaded on the transportation vehicle, okay. And then it further says ABC company also incurred the unloading charges at their warehouse while receiving the goods, and those charges were rupees 12 per unit on June 15. So on June 15 they received the goods. While receiving the goods they also incurred some unloading charges. Invoice from supplier shows credit terms 3% discount if paid within 10 days and total credit period is 30 days. ABC company made the full payment to supplier on June 16.
So it means that they availed this discount offer and paid the full amount on the next day, which is June 16. And the requirement we have is prepare necessary journal entries. Okay, so this was a scenario. I tried to bring all the points that we have covered, we have learned so far with respect to inventories and the cost of inventories. So this will also refresh our memory related to cost of inventories, and we will see how these transactions will be recorded. Okay, now let's see the journal entries required. Okay, so the inventories were purchased on June 10. Okay, 1000 units were there at a price of 500 per unit. So it means that 1000 into 500, it means 500,000 is the selling price, is a sales value, and on top of that they will have a sales tax of 17%. Okay, so the first entry, and the important thing here is that ABC company is not registered for sales tax. Means the supplier is a registered sales tax person who is charging sales tax on their invoices, but ABC company is not a registered person for sales tax purposes. So first entry we will create for the inventory in transit, okay, and see how it will be created. So the first entry will be recorded on June 10, which is we will debit the inventory in transit with the invoice amount. Invoice amount will include invoice price, which is 500 into 1000 units, 500,000 plus 17% sales tax on top of that, which is 85,000. So since ABC company is not a registered person for sales tax, so it will debit the inventory in transit with the whole amount, which is 585,000, and then it will create a liability towards supplier on the same day, on June 10th, and credit the accounts payable with 585,000 towards supplier. So this is the first entry that was created once the goods are picked by the transportation company from the supplier's location. This entry is created, means that ownership is transferred from supplier to the buyer, because the Incoterms are X works. Acha. Then we have second entry, which is the transportation cost. Okay, so the transportation company was there and they also incurred some loading charges plus their own transportation charges that they will charge to the buyer, which is ABC company. So for that another entry is required, which is, and we all know that inventory cost will include the transportation cost plus any loading and unloading charges. So how this 35 is created? This 35,000 is created, which is 25 plus 10. 25 is the transportation per unit and 10 is the loading charges per unit, which is 35, and we purchase 1000 units. So the total of our transportation and loading charges 35,000. Since it will become inventory cost, it will become part of inventory cost, we debited again inventory in transit and created a liability towards the transportation company. The information given to us is saying that transportation company will charge 25 per unit for transportation and loading charges paid by the transporter while picking the goods were rupees 10 per unit. इसका मतलब ये है, it means that the transportation company incurred some other expenses, which is loading charges in addition to their transportation cost. Transportation cost तो हमें charge करेगा, लेकिन उसने हमारे behalf पे loading charges भी pay कर दिए हैं वहाँ पे, तो वो भी हमसे ही recover करेगा. So we are liable to pay these loading charges as well as transportation cost.
ठीक है, तो इसकी हमने liability, we created this liability 35,000, so it will become part of inventory cost. Okay, so the description is to record transportation and loading charges payable to transport company. Okay, so these are the entries till June 10. Okay, now there is some more information given to us. So next is further, ABC company also incurred unloading charges at their warehouse while receiving the goods. Unloading charges are rupees 12 per unit, and the goods were unloaded on June 15. Okay, so on June 15 we received the goods. ABC company at their location, they received the goods. So this inventory in transit will be converted into inventories because we physically received the goods. So we made this entry on June 15. So it is the total of the inventory in transit. The total of the inventory in transit is 585 plus 35,000, which is 620,000, and the whole amount is credited, and inventory is debited with 620,000. Okay, so this entry is to record inventory when received. Okay, and then we have like incurred some other some unloading charges, which is rupees 12 per unit. So we paid it to the labor. There must be some labor who are unloading the inventory. So at the rate of 12 per unit, so 12,000, it is 12,000, 1,000 units into 12. Okay, so inventory, and this is unloading charges. Again, it will become part of the inventory cost. So we debited the inventory and credited the cash because it was paid at the same time, like it was paid from the cash. Paid unloading charges to labor. Okay. Now the next is like invoice from supplier shows credit terms, 3% discount if paid within 10 days. Total credit limit is period is 30 days. ABC company made full payment to the supplier on June 16. So on 15 we received the goods, we unloaded and we recorded the inventories, and on 16 we cleared the liabilities towards the supplier. Okay, so we made full payment and avail the discounts, and you know that these type of discounts will be deducted from the cost of the inventory. So we'll make this entry. The whole amount from the accounts payable, the liability will be debited. Okay, because after paying this amount, we will not have any liability towards the supplier. So 585, which we initially credited, is debited now. Now inventory will be credited with the amount of discount, and the remaining amount will be paid to supplier. Here we have one thing that we need to take care of, that sales tax, on the amount of sales tax we will not calculate discount. Discount will only be calculated on the selling, on the purchase price, which is like in our case is 500,000, like 500 into 1,000 units, that is the purchase price. So we applied 3% discount on the purchase price, which is now 15,000, and from 15,000 we credited the inventory because in discount is to be deducted from the cost of the inventory. Okay, this discount is availed because of the early payment we made to the supplier. So this will be credited to the inventory, and the remaining like 585,000 was the total invoice amount, which was 500,000 was the purchase price plus 85,000 was the sales tax. So we deducted 15,000 as discount, and the remaining 570,000 we paid to the supplier. So this is how we will record the transactions for this scenario. Okay, so I hope this is clear. The concept of inventory in transit is clear. Okay, if you have any questions, do comment on the video. Okay, I'll respond them. Okay, if you have not subscribed to the channel, kindly subscribe this channel. Okay, in the next video we'll again move to inventory valuation. Okay, so in the next video what I will do, I will
try to bring some more transactions within this scenario, and we will calculate the inventory valuation through some cost formulas if we have this type of scenario. Okay, so अब तक हमने ये देख लिया कि हम इन्वेंट्री इन ट्रांजिट की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं. अच्छा, अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो हम पढ़ रहे थे कॉस्ट फॉर्मूलाज, हम ये देखेंगे कि अगर इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो हमारे पास और फिर हमें बोला जाए कि इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करें थ्रू सम कॉस्ट फॉर्मूलाज वेदर फीफो और वेटेड एवरेज, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी. तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सिनेरियो को, इसी डेटा को यूज करते हुए हम देखेंगे कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैसे करते हैं. इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं. थैंक यू.